Hello everyone, welcome to this Ask Us Anything session. इस सेशन के थ्रू हम आपके काफी क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते हैं. We had sent a survey few days back जिसमें आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछे and we have collated those questions and picked the most popular 15-20 questions that covers I think all of your questions, and we will be answering those questions in this session, in this video session. And एक interesting, so if you see this video, you don't see हम लोग सब साथ में बैठ के वीडियो नहीं बना रहे हैं. हम सब अपने अपने घर से ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वी आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी. अभी जिस टाइप से माहौल है कोरोना वायरस के कारण, एंड द होल कंपनी इज वर्किंग फ्रॉम होम, so we're trying to stay connected and help you with this. So let's begin the session. Let me introduce you with the Grow team, which is there here to answer your questions. There's Lalit, who is the CEO of Grow. Ishan, Varun, and myself, Harsh, will be answering your questions. If you have any other specific questions which are not answered here, आप हमें email भेज सकते हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो में जो कि YouTube पे आप नीचे comments में question पूछ सकते हैं. We will make another video shortly. Let's start. So पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी लोग पूछना चाहते हैं, why are markets down? Markets गिर क्यों रहे हैं? So Lalit, can you answer that question for our users? Markets work because people are buying and selling stocks in the market, and depending on की situation क्या है, कभी लोग बहुत pessimistic होते हैं कि यार market तो नीचे जाएगा, सब लोग बेचने की कोशिश करते हैं. कभी लोग बहुत optimistic होते हैं जिसमें bull markets में जब लोग बहुत hopeful होते हैं कि prices बढ़ेंगे और खरीदना चाहते हैं. So अभी market काफी pessimistic है. जो भी participants हैं markets में, they are not thinking good about the future. And this is primarily because the number one reason that comes to mind is कि जो COVID-19 की situation चल रही है, कोरोना वायरस की, इसके कारण इकोनॉमी में बहुत इम्पैक्ट आएगा, बहुत सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट होंगे, और लोगों को ये अनसर्टेनिटी है कि मार्केट्स कब इकोनॉमी वापस आएगी, कब ये सिचुएशन बेटर होगी. इसलिए दैट्स माय ओपिनियन. बट अगेन मार्केट्स का काम होता है बढ़ना और कम होना. हम लोग सिर्फ जस्टिफाई कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा. So actually, I have another point of view. So another reason why today markets are going down, इसमें एक और फैक्टर है कि बहुत सारा मार्केट इंडिया में is handled by FIIs. A lot of people from outside India are investing in India, and some of them are actually started selling because in their home countries the problem of same coronavirus is significantly higher, and they are having a need for cash. So this is one of the another reason why a lot of people are kind of pulling money from the market and trying to kind of use it in their home markets. तो उसके कारण भी अभी थोड़ा market pressure में चल रहा है, and SEBI has started doing some of the work on kind of reducing such uncertainty in the market. तो उन्होंने कुछ नए initiatives लिए जिसके कारण probably एटलीस्ट लोग बेटिंग करना कम कर देंगे, जिससे थोड़ा रिस्क और वॉलिटिलिटी इन द मार्केट कैन गो डाउन. तो जिसके कारण एटलीस्ट ये होगा कि लोग डरेंगे कम. बट जब तक ये जो फियर है कोविड-19 का तब तक क्लीन नहीं होगा, जब तक कोई somebody is not able to kind of figure out कि what will gonna happen in 3 months down the line. Once that is clear, market can actually come back as well. So one more thing about the markets, going down was, so no, if you look at it historically in the last 2-3 years, right? So market is basically, we are defining it as Nifty and Sensex, right? Which is a combination of top 50 schemes or top 50 companies or top 100 companies. And this companies, and if you look at in the last 2-3 years, these are the companies which have been growing significantly, and remaining market has not been growing. And this was a correction which was bound to happen at one point of time, and COVID-19 has just become a catalyst for it, right? So it is not just that the markets are going down because of COVID-19. This was anyways going to happen, and it also does not mean that after all this is over, is that market will bounce back sharply again. But that is largely, so it's a combination of factor COVID-19 across. Plus, overvaluation in the last couple of years for at least the large cap companies. Okay. So to summarize,
there is a pessimism in the market because of the coronavirus and the potential business loss. There are a lot of institutes who invest, who bet, and they are becoming less aggressive about it. And of course, there is some sort of corrections also which has come in place, and coronavirus events have become a catalyst to do that. So overall, those are probably the reasons why markets are crashing. But as Lalit said initially, markets behave in a very unpredictable way also. So we'll still have to see. We cannot predict what will happen in the future. Okay. So the next question, and I think a lot of people are now understanding when the market is down, people feel this as an investment opportunity. So बहुत सारे हमारे users ने पूछा है कि is it a good time to invest? Varun, do you want to start this? Sure. So, देखिए, a good time to invest is a very subject. It's a very personal question, right? So we cannot हम ऐसे overall level पे it will not be a right position to say कि अभी market down है तो आप invest करिए. It's your personal call, right? It depends on, first of all, do you have first of all money to invest? Second, आप उसको कितने time तक invest रखना चाहते हैं? Second, आपका risk capability क्या है? Right? So all these factors you have to understand before you take a call कि आपको invest करना चाहिए कि नहीं. About people saying whether it is a good time to invest, this is usually a question for people who are traders, right? जो position लेते हैं market में, they will do a stop, they will do short sell or they will do short term purchases. For retail investors like you and I, who are investing for long term, who have long term goals, हम लोग what we basically think of is कि you should not think about timing the market at all. You should start with SIP. SIP is systematic investment plan, where is a certain amount of money which gets deducted from your account every month and gets invested in the scheme of your choice. And you should continue investing via SIPs, right? And you should not. So one thing which can happen is that because the markets are down, it might encourage you to stop the SIP because you might be worried कि market down जा रहा है and what will happen to my investment. So if you are worried about then that's a different thing which we can talk about. But whether you should, is it a good time to invest? So we would suggest for retail investors like us, you should start a SIP, or if you have more money and if your time limit and your risk capability allows it, you should continue to invest and probably think about if you can invest more money, then probably think about increasing the ticket size of your SIP. Yeah, I have to add to this basically. When Varun talked about risk, right, and when he talked about kind of time horizon as well. So this is very important. So today, what you can think about is that the risk in the market has increased. So at the same time, now you have to start thinking about your time horizon again. So probably earlier हम लोग बोलते थे कि 3 साल 5 साल के लिए अगर आप invest कर रहे हो तो आप significant amount of equity रख सकते हो. But आज मैं बोलूँगा कि if you guys are thinking कि 5 से 10 साल के लिए at least actually 10 साल will be a better horizon. अगर आप 10 साल के लिए सोच रहे हैं तो आप equity में invest कर सकते हैं. But अगर आप short term में सोच रहे हैं तो market down भी जा सकता है, up भी जा सकता है. So you might not get the desired result. So आपको अच्छा result तभी मिलेगा equity market में specifically अगर आप long term में invest करेंगे. So focus on the investing. If you have a long term horizon, you have money which you don't need for next 10 years, then definitely you should invest it in markets and market will give you rewards for it. But अगर आपका short term का time horizon है तो probably you should avoid investing today. And SIP as a tool is the best case scenario for people like us who are on a salary, who actually gets money on a monthly basis. So हर महीने आपका कुछ ना कुछ पैसा तो बच रहा होगा. तो उस केस में वो पैसा अगर आप डालते रहेंगे मार्केट में तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, दोनों केस में you will be able to make money because it's very difficult to predict the market. कल को वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है. So if you stop investing in SIPs and market goes up, you will lose money. If you start investing lump sum today and market goes down, you will lose money. So in case of SIPs, जो अच्छी चीज होती है, there is averaging that is happening. आज आप अगर पैसे डाल रहे हो, आप कल भी डाल रहे हो, परसों भी डाल रहे हो. एक दिन मार्केट बढ़ेगा, एक दिन मार्केट गिरेगा, एक दिन मार्केट बढ़ेगा. तो ऐसे करते करते आपका ओवरऑल एवरेज हो जाएगा और नेट नेट आप पैसे कमा लोगे.
So the only way to look at it is two things. One, एक तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना है, स्पेशली इक्विटीज में. सेकंड चीज, आपको SIP में कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज उसमें एवरेजिंग होगी. One more point I wanted to add here. अभी क्या होता है जब मार्केट्स गिरते हैं, जिस दिन बहुत ज्यादा मार्केट्स गिरते हैं, हम उस दिन देखते हैं कि बहुत सारे यूजर्स इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे, लाइक वॉल्यूम्स गो अप स्पेशली ऑन दैट डे, क्योंकि एक हमारे अंदर एक एक्टिविटी बायस होता है. वी वांट टू एक्ट ऑन समथिंग. जैसे ही कुछ एक्टिविटी होती है मार्केट में, हमको कुछ करना होता है, लाइक ओके आज मैं और थोड़ा इन्वेस्ट कर देता हूँ म्यूचुअल फंड में, या स्टॉक में खरीद देता हूँ. तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ये टाइमिंग, एक जैसे कि वरुण और ईशान ने ही बताया, टाइमिंग करना मार्केट को बहुत मुश्किल होता है. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज द बॉटम एंड व्हाट इज द टॉप. सो इफ यू कैनॉट कंट्रोल दैट अर्ज टू constantly time the market कि अच्छा भी गिर गया मैं और इन्वेस्ट कर देता हूँ, या बढ़ गया मैं बेच देता हूँ. what you can do is you can keep a play money aside कि ठीक है, let's say मैंने 5,000 रुपए रख लिए अपने साइड, I will play on just that, just to meet your urge to time the market. Don't play with your significant capital, which is your net worth, but so that you are also entertained, but don't play with your money, real money. Yeah, makes sense. I think this is very helpful. Another question lot of users have asked कि उन्हें अभी के टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेट फंड्स या लिक्विड फंड्स, इन टाइप के इन्वेस्टमेंट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी है, या कैसे वो प्लान करें कि इनमें इन्वेस्टमेंट्स अभी करें या बाद में करें, या इनमें भी कोई रिस्क है? तो एनी लाइट ऑन दीज थॉट्स एंड दीज क्वेश्चंस? ईशान, कैन यू स्टार्ट विद? So I think this is very important when you are looking at asset allocation. So ये एक तरह से आप asset allocation की तरह सोचिए कि अगर आज के दिन में आपने सारा का सारा पैसा इक्विटी में डाल रखा है, probably this is the right time when you should start investing in debt, because debt आपको एक ना risk mitigation का help करेगा, at the same time आपकी diversification भी हो जाएगी. So if you are more and more equity focused, then start investing in debt. वाइस वर्सा एज वेल. अगर आप पूरा का पूरा पैसा आज के दिन में डेट में डाल के बैठे हैं, तो आई वुड सजेस्ट स्मॉल कंपोनेंट, लाइक ललित आल्सो सजेस्टेड कि आप प्ले मनी उसको बोल सकते हैं, आप 10% से 20% अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में रख सकते हैं, बिकॉज आज के दिन में यू विल बी एबल टू डाइवर्सिफाई एट अ चीपर कॉस्ट एज वेल. तो इसका बेनिफिट है कि डाइवर्सिफिकेशन हमेशा होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का. वो इक्विटी में हो सकता है, डेट में हो सकता है, आप गोल्ड में भी सोच सकते हैं कि कुछ इन्वेस्टमेंट हर जगह रहे, ताकि जैसे बोलते हैं कि यू शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट. तो आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चाहिए. अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है और आपका टाइम होराइजन भी लॉन्ग है, तो आप इक्विटी में ज्यादा रखिए. अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है और आपका टाइम होराइजन शॉर्ट है, तो आप मोस्टली पैसा डेट में रखिए. और गोल्ड एक और एसेट क्लास है जो बढ़िया वर्क करता है व्हेनेवर इक्विटीज आर सिग्निफिकेंटली डाउन. आपने देखा होगा पिछले 3 महीने में एक्चुअली गोल्ड काफी ऊपर गया है, बट स्टिल आई वुड से कि गोल्ड में भी ऐसे नहीं बहुत ज्यादा पैसा भी आप 80% ऑफ पैसा गोल्ड में रखें. 10-15% पैसा आप गोल्ड में रख सकते हैं, उससे ज्यादा इट विल नॉट गिव यू गुड रिटर्न्स. सो इसीलिए आपको अपना पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से. स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स? You mean to ask कि stocks में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना? काफी यूजर्स का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केट जब गिर रहा है, सो दे सी लॉट ऑफ एक्टिविटी. बहुत डायनामिक होता है स्टॉक मार्केट को देखना, न्यूज़ पढ़ना, एंड कुछ लोगों को लगता है अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों को फियर लगता है, कुछ लोगों को ग्रीड होता है. सो पीपल आर आस्किंग, शुड दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स और शुड दे बाय स्टॉक्स एट दिस टाइम? दोनों बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, लाइक सो आई एम अज्यूमिंग कि जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं म्यूचुअल फंड्स वर्सेस स्टॉक्स, तो हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स तो बहुत ही डिफरेंट हो जाते हैं, अलग अलग कंप्लीटली डिफरेंट नीड है. इक्विटी म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्टॉक्स. सो डाइवर्सिफाइड आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई हो रहा है, एंड देयर इज वन प्रोफेशनल फंड मैनेजर who is looking after your investments. When you're buying stocks, you are betting on it. Like basically, you understand the company, you understand the industry, and you are putting your money on that. So it depends on, like, what is your situation. Like if you understand the stock, if you understand the industry, and if you really think that you can do better than a fund manager,
and diversify yourself, then go in stocks. Otherwise, like for 90% of the folks, mutual funds might be better choice. But again, being said that, there are a lot of people who invest in both the products. Like for example, I invest in both the products. For most of my portfolio is in mutual funds, but then there are some companies which I understand and I like, and I invest in them. So another point actually which everybody should consider in this case is कि जब market volatile होता है, so उस समय सबसे difficult होता है choice बनाना which stock to buy, because market जब आज के दिन में आप देखोगे बहुत सारे stock actually 20-25% plus minus हो रहे हैं, और जबकि म्यूचुअल फंड आप देख रहे होगे 4 से 5% प्लस माइनस हो रहे हैं. तो अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड रिस्क एनीवेज रिस्क तो कम है ही, बट जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है स्टॉक्स और भी ज्यादा रिस्की हो जाते हैं. तो आज के दिन में स्टॉक में आप एक दिन में भी 25-30% पैसा लूज कर सकते हैं, इन सम केसेस इवन 40-50%. बट म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डालेंगे तो आपका लॉस कम होगा रिलेटिवली, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है. तो वो एक स्टॉक में पैसे नहीं डालेगा, वो 50 से लेके 100 स्टॉक्स में पैसे डालेगा. तो वो म्यूचुअल फंड थोड़ा इंडेक्स की तरह है. अगर आप देखेंगे निफ्टी और सेंसेक्स तो वो 4-5% मूव कर रहे हैं, बट इंडिविजुअल स्टॉक आपके 20 से 25% मूव कर रहे हैं. तो इसलिए अनटिल अनलेस लाइक ललित सेड कि आपको अच्छे से एक कंपनी के बारे में पता है, आपको पता है कि ये अगर 25% डाउन भी गया है उसमें ज्यादा वैल्यू है, तभी आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करें. अगर आपको नहीं आइडिया है, अगर आप सिर्फ गेस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड बेटर है, बिकॉज उसमें आपका लॉस कम होगा. Okay. Yeah, and just building up on जो हर्ष और ललित ईशान और ललित बता रहे थे. So for example, just to give you an example, अभी equity mutual funds क्या कर रहे हैं. जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखें फॉर ऑल द इक्विटी स्कीम्स, तो उनका ओनली 80% ऑफ मनी जो उन्होंने फंड मैनेजर ने पूल कर रखा है इज करेंटली इन्वेस्टेड. रिमेनिंग 20% ऑफ ऑल देयर इक्विटी स्कीम्स इज इन कैश पोजीशंस. तो दिस इज एज ऑफ February एंड. तो दैट इज सो वो लोग भी अभी दे आर होल्डिंग ऑन टू दिस कैश एंड दे आर आल्सो चूजिंग कि किस इक्विटी फंड में उनको इन्वेस्ट करना है. दे आर आल्सो एनालाइजिंग एट देयर एंड. तो so basically the difference it comes is that whether you can do investments better than a fund manager for your long term goals, or for your again when it comes to equity mutual fund versus equity, or so that is one call which you need to take. And if that is not true, then invest in mutual funds. And second, if you know about a company, like the way Ishan said, if you know about a company, you know that the fundamentals of company are good and this company will definitely perform good in the long run, or you can actually invest and hold money in that stocks of the company and can accept that kind of a volatility for a long term, then you can go ahead investing in that in that particular stock. Yeah. So volatility, by the way, matlab, there are companies, even the best companies, जो -20% हो जाती है, -50% हो जाती है, जिसको drawdown बोलते हैं. Like when even the best investors have seen those drawdowns. And अगर आप if you think that you can hold on to your stocks with that kind of drawdowns without selling, then nothing like it. Like you can be a good investor. I think for a lot of people, जैसे जो लोग डे टू डे स्टॉक्स वगैरह ट्रैक नहीं कर पाते, मार्केट की न्यूज इतना ज्यादा नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है. बट आई थिंक कमिंग बैक टू द अर्ज ऑफ इन्वेस्टिंग एंड कैचिंग द वॉलेटिलिटी की मार्केट में क्या चल रहा है, आई ऑल्सो वांट टू पार्टिसिपेट. आई थिंक कुछ मनी असाइड रख के अच्छी कंपनीज में, जो थोड़ी कंपनी समझ में आती है, यू यूज द प्रोडक्ट, यू लाइक देयर सर्विसेज एंड यू बिलीव कि फ्यूचर में भी उस कंपनी के जो services hain, customers they will stay, so then you can part some part of money and buy both the things. But right thing would be to balance it. Yeah, and Harsh, that is where the point of Lalit comes in, that don't lose your future for the short term thrill. Yes. Right, so maintain some play money if you want to invest in stocks. Unless you don't understand stocks, then continue investing only in mutual funds. Yeah, there are other ways to get the thrill. Poker khel sakte hain. But I think for real serious money, you should
you should be careful. Definitely. So let's quickly, guys, let's quickly take some short questions and like quickly answer. So there are some people who are sort of confusion. They are saying that their investment value is going down drastically, and will it become zero, or will it like they lose everything, or will it come back when the market comes back? So they hold some units. The confusion is, if the money is going down, value is going down, will they lose units also? सो मार्केट ऐसे वर्क नहीं करता है. सो यूनिट्स, आप ओनर ऑफ यूनिट्स हैं, वो यूनिट की वैल्यू चेंज हो सकती है, वो कभी भी जीरो नहीं जाएगी, हमेशा जीरो से तो ऊपर ही रहेगी. अगर आप इवन स्टॉक्स भी देखेंगे, कोई भी घटिया से घटिया कंपनी भी पकड़ के देख लेंगे, उसकी भी वैल्यू आज के दिन में जीरो नहीं होगी. तो जीरो आपकी वैल्यू कभी नहीं जाएगी. आपके यूनिट्स आपसे कोई नहीं ले सकता अनटिल अनलेस आप बेचोगे. द ओनली वे you can lose money on this is कि अगर आपने पैसा डाला है जितना, जब आप बेच रहे हैं उस समय उसका अगर वैल्यू कम हो गया तो you will make a loss. लेकिन अगर आपने आपके पास जो यूनिट्स पड़े हैं और उनकी जो वैल्यू है वो कभी भी जीरो या नेगेटिव या फिर आपके यूनिट्स आपसे कभी नहीं लिए जाएंगे. Okay. So another question, I think we can have a very quick answer on that. People are saying किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी ज्यादा गिर रहा है, किसी का कम गिर रहा है. सो इज इट अ गुड स्ट्रेटजी कि मैं जो ज्यादा एनएवी गिर गया है वो खरीद लूं और जो कम गिरा है वो ना खरीदूं ज्यादा, सो दैट आई कैन बाय चीपर? विल दैट गिव मी मोर रिटर्न्स? डज इट वर्क लाइक दैट? NAVs are almost irrelevant, right? So it's like this कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसको ये याद नहीं होता कि कल क्या प्राइस था और परसों क्या प्राइस था, राइट? सो मार्केट मेमोरी लेस होता है. सो जो आज की सिचुएशन है वर्ल्ड की, जो प्राइस है उसको याद नहीं है कि उसका कल क्या प्राइस था. सो इट डज नॉट मैटर कि वो 5% गिर गया या 10% गिर गया तो आप जरूरी है कि वो 10% वापस ऊपर हो जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ द कंपनीज, राइट? सो इंस्टेड ऑफ looking at the heavies, we should look at other important factors in the market. Like बहुत सारे लोग जैसे share, when we talk about stocks, people talk about price, right? स्टॉक का प्राइस क्या है, 800 रुपए HDFC है कि 1000 रुपए, उससे फर्क नहीं पड़ता. व्हाट मैटर्स इज कि HDFC का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है और HDFC जितना पैसे कमा रहा है, इज इट वर्थ द मार्केट कैपिटलाइजेशन, इज वर्थ इट, राइट? सो लाइकवाइज इन NAV आल्सो, लाइक म्यूचुअल फंड, इफ यू लुक, यू शुड लुक एट कि how consistent your mutual fund returns have been, right? How consistent the fund manager has been for last 5 years, for last 10 years, how they have handled the downturns, right? What is the expense ratio of the mutual fund? Those are more important things than looking at the NAV. Yeah. And अगर आप NAV drop, आप अगर if you start looking at schemes का NAV drop हो रहा है और उसके हिसाब से if you make investment choice, तब most time you will end up investing in sector funds. तो अगर अभी आप देखें तो NAV drop म्यूचुअल फंड्स में is happening significantly across sector funds who invest only in a particular sector. So for example, a Digital India fund or a banking fund, which is where the biggest chunk of this market drop has happened. But if you look at it, अगर आप देखें जो diversified funds होते हैं, जैसे अगर आप कोई large cap fund देखें जिसने across इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई कर रखा है, which is in construction or banking or logistics etc. तो because जो इंडस्ट्री का डाउनफॉल has happened different across different industries, उन लोगों का इतना डाउन नहीं हुआ है. So that doesn't mean कि sector funds are a better because उनका NAV drop ज्यादा हो गया, they are a better investment positioning right now and they will recover faster. It doesn't mean that at all. जैसे ललित ने बोला कि depends on the basic fundamentals of the company and it depends on how the underlying asset classes of that assets of that mutual funds are. In that case, you actually are in a better position if you do not invest in in schemes which have a very high NAV drop, because you don't know what is going to happen to that sector. No one knows. But if you choose to invest in a scheme जिसमें diversified है, जैसे large cap या core large cap या core mid cap schemes, multi cap schemes where you can and you can go inside the Grow app and compare across in that particular category, you can compare across different schemes. Then you have a better chance in the long run of making stable returns and not getting this kind of volatility which you have just seen.